Hello and welcome to Ignited Minds. Welcome to the discussion of the Hindu newspaper analysis. Today it's 20th of July 2024 and the news articles which are important in this newspaper are highlighted on your screens. You can say that there are articles varying from GS1 to GS4 and you will be very well understanding the places in news with regard to Middle East. We'll also see an article about disaster management which comes in this parametric insurance. And what is this parametric insurance? We will also be seeing. In the polity section, we have an article on Uniform Civil Code, and in economics and Indian economy section, we have a particular article about the capital goods market and the global electronics revolution. We will also see an article from Science and Tech, which is based on the functioning of radar. There is a news about Bangladesh unrest in which 105 people are dead. The protests are going and majorly the students and Indian students and citizens are under question, and now we need to think about, and Ministry of External Affairs is already thinking about that how to manage the situation, as we have seen the statement yesterday of our Foreign Affairs Minister that this is an internal matter of the nation in our neighborhood. Done. So let's begin the discussion. And there is an important editorial today about unemployment, which is written by Mr. Arun Kumar, the retired professor of JNU. Before we begin the discussion, we have this tradition of discussing a UPSC prelims PYQ every day. This question is also from the same paper which we are discussing in the series. It was asked in UPSC 2024 and it asks the students to have knowledge about some of the countries of the world which are having low birth rates or low fertility rates, or they are having aging population. Okay. Why this question was inspired and how you can easily solve this question was because you will see there is a contrast in these countries. Some are developed countries and some are developing or underdeveloped countries like South Africa and Nigeria. Fine. So these are the two countries which you can group in developing, or underdeveloped countries, while as Italy, Japan, and South Korea, they are one among those who are, you can say, comparatively smaller states but developed to an extent. So the easiest way was to have this mark 1, 2, and 4, which was the answer. But let's understand why this question came in news, or why this question came into your paper, because the same thing was in news. You can see on 2nd of May there was an editorial about Asian nations and their fertility drop. On 29th of February there was a article about lowest fertility rate in the world, that is South Korea, and Japan's low birth rate. So in the month of Feb, there came two editorials in the consecutive days of 28th and 29th Feb in the Hindu newspaper. That is why this question was inspired from this, most probably. Now, this highlights that how much important is the news discussion which we are currently a part of. Let's see that the question talks about Japan, Italy, Nigeria, South Korea, and the other parameters. You can see the demographic parameters and demographic data of these countries, which is highlighted on the screen. And the answer to this question was Italy, Japan, and South Korea. Now, let's begin the discussion. And the first article, which was on the first page of the newspaper today, talks about the Microsoft's outage, which disrupted several sectors worldwide. And how many sectors are disrupted over here, and what else can be disrupted, and how much of a grave incident was this, you will see in the upcoming slide. That it highlights that, let me see, it highlights the Windows system of a cybersecurity firm affected aviation sector, banking sector, TV channels, and telecommunication. It also affected aviation sector. It also affected manufacturing sector. It has affected broadly
majority of the sectors. And when we talk about the experts, they have highlighted that there was a glitch in the software update because maybe some one of the programmers, as highlighted in this article, it says that one of the programmers, he downloaded and he downloaded an update without sufficient quality control, and which is yet to be investigated that whether there was an involvement of cyber attack or not, but most probably it was the glitch in the software update. Now, there are some key important terms which you must understand. One is the cyber security of India. In which CERT-in, which is the Computer Emergency Response Team, is very much important. Second is what is this BSOD, and third is what is this kill switch or doomsday command. So we will be going through all these terms. Stay alert that what are the nits and glitches of this. So the critical error has highlighted the worldwide disruption. As you can see in the aviation sector, some flights were delayed and some flights were cancelled. Also, there was manual check-in which was done by the airlines because their systems stopped working. In the banking sector also, the institutions got affected. Telecommunication, healthcare, media channels, and the manufacturing sector like Maruti Suzuki had to halt its operations for some point of time. Now, what is this blue screen of death, that is BSOD? And what this point actually highlights is that there is a software known as CrowdStrike's Falcon software. It detected the endpoint threat detection product. It is the endpoint threat detection product, and this product is in Windows, and it causes Windows computers and servers to experience this BSOD. And then once the BSOD happens, then the computer enters into the boot loop. Boot loop means that it starts to boot. Boot means to start. The computer opens up, it tries to start, but it's not starting. It actually goes back into the boot. Then the loop continues. ये पहले फॉर एग्जाम्पल आपने पावर बटन ऑन किया, ठीक है, ऐसा होता है पावर बटन ऑन किया, and you see a kind of light appearing on your screen. Once you think that computer is starting, but it goes back and starts to boot again, then it goes back, starts to boot again. That is boot loop. What is blue screen of death? That is simply आपका screen जो है वो blue हो जाएगा पूरे का पूरा, बस. And these two things are due to this software, that is CrowdStrike's Falcon software. This software is an endpoint threat detection product. Remember this point, which is very critical. Okay. Now, all of this incident has highlighted the interconnectedness of this modern world, fine, in which everything is connected. Aviation, banking, telecommunication, healthcare, media, manufacturing, everything is connected. And how, if a single point shows failure, the diversity of the sectors gets affected. What are the technical aspects? As I highlighted and explained, the BSOD and boot loop, it's the continuous restarting of the system. What are the causes? One was the faulty update of the software, that is CrowdStrike's Falcon software, and another is possible conflict with this software and the Windows recent update. That was the major reason. Okay? You need to understand that, and it's not that much important that what was the reason behind this. But yes, you must understand the terms because UPSC usually asks these terms. Next is the recovery process. How they recovered? They implanted some steps like a 4-step recovery process is their basic SOP which they highlight. And what are the incidents about the response and management? So what we did was, first इन्होंने ये सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया, इनने फिक्स लगाया इस पे जो सॉफ्टवेयर था जिसमें जो भी अपडेट में गलती हुई थी, प्रोग्रामर से गलती हुई थी, डेवलपर से गलती हुई थी, उस कोड को ठीक कर दिया होगा. One thing. Second thing is very much important, that
हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से कांटेक्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट ने उनको एक एडवाइजरी भेजी और वो एडवाइजरी सर्ट इन ने पब्लिक डोमेन में जारी कर दी. दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ we also need to talk about the India's vulnerability to cyber attacks. ठीक है. And what is this vulnerability? If you see that India has a growing population of internet users, and we have currently around 52% of our population, which is around 759 million people who are accessing internet. More than this, okay? India is the second largest online market in the world. Okay? Second largest online market in the world, and by 2025 it's expected that this number will grow to 900 million people. And India has been expanding its digital economy. हम डिजिटल इंडिया हमारा मिशन है. वी आर फोकसिंग ऑन डिजिटल सेक्टर. हम बहुत ही ज्यादा कनेक्टिविटी पे भरोसा कर रहे हैं. एंड इन सच सिनेरियो वी हैव टू फेस challenges. Those challenges which are posed to us by the cyber attacks. Why these cyber attacks and how kind of cyber attacks these are? Like, for example, in 2019 we saw a cyber attack on Kudankulam nuclear power project. Second, we also saw financial security threats. Like in March 2020, there was a malware attack on the City Union Bank's SWIFT system. What is the SWIFT system? This is basically, और इस अटैक की वजह से there was a loss of around 2 million USDs, $2 million. And what is the SWIFT system? This is the international payment system in which they reflect the payments in each other's accounts. Then there comes data breaches and privacy concerns, and you can see that in May 2021 there was another attack that the personally identifiable operation, this information of around 1,90,000 candidates who appeared in a common admission test, that was breached. And this information of all of these 1,90,000 candidates was put to sale on cybercrime forums. Those candidates who happened to appear in CAT exam for IIMs, their information of 1,90,000 candidates got lost, and that was sold, and that appeared for sale on the darknet. Similarly, in 2020 there was an operation, a cyber espionage campaign called Operation Side Copy, which was implanted by Pakistani. It was a Pakistani threat actor and was uncovered lately by the Indian military and diplomatic personnel. Okay, such are the attacks which you should, one or two of them, remember and then quote in your answers. There are supply chain vulnerabilities also, like the global cyber attacks on solar winds, basically the attacks on the satellites and the attacks on national informatics centers. These are some of the issues which we can understand the gravity of cybersecurity and the cybersecurity attacks. Now, the Indian organizations which are working for this are, first we have NIC, that is National Informatics Center, and we have Ministry of Electronics, Information and Technology, that is METI, and we also have Bharat Heavy Electrical Limited, that is BHEL. What are the initiatives which India has been implanting to tackle the threat of cybersecurity? So the initiatives
which we will be talking about are varying from national cyber security policy. ये गवर्नमेंट की लार्जर पॉलिसी है. This policy aims to build a secure and resilient cyberspace for citizens, businesses, and government. Next, we have cyber सुरक्षित भारत initiative. Remember, this initiative was launched to raise awareness about cyber crimes and create safety measures for the chief information security officers and the frontline IT staff in the government departments. ठीक है, तो जितने भी चीफ ऑफिसर्स होंगे, सिक्योरिटी ऑफिसर्स होंगे और जितने भी आईटी स्टाफ होगा गवर्नमेंट ऑफिसेज में, उनको अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था, दिस इनिशिएटिव. Next, we talk about the Indian Cyber Crime Coordination Center, which is also known as I4C. I4C. This center was established. This center was established to provide a framework and ecosystem of law enforcement agencies. अब इसमें जो law enforcement agencies है, there are 7 components. ठीक है, इसके अंदर there are 7 components. Like there is National Cyber Crime Threat Analytics Unit, there is National Cyber Crime Reporting Portal, there is National Cyber Crime Training Portal, Training Center, Ecosystem Management Unit, Innovation Center, Forensic Laboratory, and Joint Cyber Crime Investigation Team also. We also have in the initiatives only Cyber Swachhata Kendra. ठीक है, these are actually botnet cleaning and malware analysis centers. ये वो सेंटर्स है जो आपके सिस्टम्स को, गवर्नमेंट के सिस्टम्स को एक तो क्लीन करते हैं और वहां पे एनालिसिस करते हैं कि कहीं किसी किस्म का सॉफ्टवेयर, ये वायरस, कोई मॉलवेयर, कोई बॉटनेट तो इंस्टॉल्ड नहीं है. देन कम्स द सर्ट इन. This CERT-in is an organization of MeitY. ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है. ये क्या काम करता है? ये कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और डिसेमिनेट करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द साइबर इंसिडेंट्स. किसके लिए? इंसिडेंट्स. अगर किसी भी किस्म का ऐसा इंसिडेंट हुआ तो उसके लिए जो इंफॉर्मेशन वो स्प्रेड करना. जैसे इस बार भी हमने देखा यहाँ पे CERT-in जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने क्या किया, पहले वहां से इंफॉर्मेशन ली और उसके बाद बाकी अपने डिपार्टमेंट्स में भेज दी. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द शिवाजी महाराज. ठीक है, दिस बेसिकली इज जस्ट एन हाईलाइट ऑफ द वागनाक. व्हाट इज दिस वागनाक? This is the tiger claw shaped weapon which reportedly has been used by Maratha warrior king Chhatrapati Shivaji Maharaj to kill the Bijapuri सल्तनत का जो उस टाइम पे बीजापुर सुल्तान था. बीजापुर के सुल्तान जो थे, बीजापुर सल्तनत के जो सुल्तान थे, उसमें एक जनरल था जिसका नाम था अफजल खान. उसको मारने के लिए यूज किया गया था. अभी ये जो क्लॉ है, ठीक है, ये जो क्लॉ है ये कहाँ पे था? ये लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया था. ठीक है, और वहां से इसको वापस लाया गया और जो अभी 350th एनिवर्सरी हुई थी शिवाजी महाराज की, उस टाइम पे इसको बाहर लोगों को दिखाया गया था. ठीक है, इट वाज पुट टू दिस व्हाट वी से जस्ट फॉर दिस टू people so that they can visit and see that what kind of this was. Talking about Shivaji, he was born on in February 19th 1630. ठीक है, and he was born in Shivneri Fort in Pune, Maharashtra. He was born to, his father's name was Shahji Bhosle.
So remember that he belonged to the family of Bhosles, a Maratha general who at that point was holding a Jagir of Pune and Supe under the Bijapuri Sultanate, and his mother's name was Jijabai. She was a pious woman and one who was tilted towards the religion. When we talk about Shivaji's earlier life or the starting life, he had military zeal, और वो चाहते थे मिलिट्री के थ्रू और मिलिट्री टैक्टिक्स के थ्रू अपना कंट्रीब्यूशन देना towards his own empire and towards his own family. When he was in his teenage, he successfully got control of the Torna Fort, which was at that point of time under the Adil Shah of Bijapur. He fought some of the important battles like the Battle of Pratapgarh, in 1659. He also fought, अभी ये battles के अंदर नहीं जाना है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. Remember these, just the names थोड़ा बहुत याद रख लेना, हो जाएगा. बट अगर आप इसके अंदर जाओगे, like the battle of this Pratapgarh was fought in Satara, और ये किसके बीच में हुई थी? ये एक्चुअल में मराठा शिवाजी महाराज और आदिल शाही जनरल जो ये अफजल खान था उसके साथ हुई थी. ठीक है, 1659 में, जिसको शिवाजी महाराज ने मारा. देन देयर केम दिस बैटल ऑफ पवनखिंड. ये 1660 में शिवाजी महाराज ने लड़ी थी. एंड इस टाइम पे भी इट वाज बिटवीन द मराठा सरदार्स ऑफ जो देश पांडे साइड से ये लड़ रहे थे, और इट वाज ऑन द अदर साइड देयर वाज दिस जनरल नेम्ड सिद्दी मसूद of Adil Shahi dynasty. Next was the Battle of Surat, जिसमें the sacking of Surat happened, जिसमें इनने सूरत पे कब्जा कर लिया. It was in 1664. ये छत्रपति शिवाजी महाराज एंड इनायत खान के बीच में हुई थी. इनायत खान was the Mughal captain at that point of time. Next is Battle of Purandar. आपके स्पेक्ट्रम में भी ये लिखी हुई है. It was in 1665. Next was Battle of Sinhagad 1670 में. बैटल ऑफ कल्याण 1682 में, एंड बैटल ऑफ संगमेनर, एंड दिस वाज इन 1679, एंड दिस वाज द लास्ट बैटल इन विच मराठा किंग शिवाजी महाराज फॉट. ठीक है, सो लास्ट बैटल ऑफ शिवाजी महाराज वाज द बैटल ऑफ संगमेनिर in 1679. This was the last battle. ठीक है, शिवाजी महाराज. He had conflicts with Mughals. He had conflicts with this Adil Shahi dynasty, जो अभी तक हमने पढ़ा. And there is a important aspect that when the Shivaji Maharaj was arrested and he went to meet Mughal Emperor at Agra in 1666. और उस टाइम पे he was insulted by Aurangzeb and he was stormed out of the court. Then he was arrested and kept as a prisoner. ठीक है, but he escaped along with his son from the imprisonment and reached his empire. और वो वापस पहुंचा, वो बेरार पहुंचा असल में जाके, जो उस टाइम पे बेरार था, बेरार पहुंचा, और वहां पे he was which was earlier granted to this Sambhaji by Mughals. Shivaji took it back. ठीक है, and in response recovered many territories from Mughals in a short span of time. ठीक है, he implanted some techniques so that he could capture large areas of Deccan and Western India. उसके बाद he got titles like the King of Marathas. इसको बोलते हैं King of Marathas. क्या बोलते हैं? ठीक है, ये टाइटल इनको मिला कहाँ पे? रायगढ़ में. देन ही टुक टाइटल्स लाइक छत्रपति. और हाँ, बाय द वे, ये टाइटल्स पे क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो याद रखना क्या क्या टाइटल हुआ. छत्रपति, शाका कर्ता, देन क्षत्रिय,
कुलवंतास एंड हिंदावा, ठीक है। एंड एक्चुअली द टाइटल वाज हिंदावा धर्मो धारक, ठीक है, द प्रोटेक्टर ऑफ हिंदू दिस रीजन. He founded the Maratha kingdom, founded the Shivaji, and it grew larger under his power. और उस टाइम पे the dominant Indian power became this Maratha power in early 18th century. He died in 1680. ठीक है. His administration, it was centrally controlled, and it is also known as the Deccan style of administration. ठीक है. मोस्ट ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जितने भी उनने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आए, दे वर इंस्पायर्ड फ्रॉम, यूपीएससी यहाँ पे ट्रैप करेगा, इंस्पायर्ड फ्रॉम मलिक अंबर ऑफ अहमदनगर. यूपीएससी पूछेगा कि मुगल से इंस्पायर्ड थे, आदिल शाही डिनास्टी से इंस्पायर्ड थे, बीजापुरी सल्तनत से इंस्पायर्ड थे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. मलिक अंबर जो उन्होंने रिफॉर्म्स लेके आए थे अहमदनगर में, वैसे ही रिफॉर्म्स इन्होंने भी लाए. इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में there was a council known as अष्टप्रधान. Already UPSC asked this question. अष्टप्रधान किसके काउंसिल में था? इस अष्टप्रधान में किंग was the supreme. ठीक है. Who was assisted by this अष्टप्रधान, और अष्टप्रधान में 8 मिनिस्टर्स होते थे. ठीक है. पेशवा, इस अष्टप्रधान में देयर वाज पेशवा हु वाज द मुख्य प्रधान, ठीक है, हु हेडेड दिस एडवाइजरी काउंसिल ऑफ शिवाजी. व्हेन यू टॉक अबाउट द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो शिवाजी एबॉलिश्ड. ये बहुत सारा पॉइंट्स जो है, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए मैं बता रहा हूं. ठीक है. ही एबॉलिश्ड जागीरदारी सिस्टम and replaced it with रायतवारी सिस्टम. ठीक है. एंड द चेंजेस ऑफ पोजीशन ऑफ हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो थे, उनको भी हटा दिया. और नाउ जो उसके कोर्ट में हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे, उनको क्या बोलते थे? दे वर नोन एज देशमुख्स, देशपांडेज, पाटिल्स या पटेल एंड कुलकर्णी. ठीक है. ये इसके कोर्ट में, शिवाजी महाराज के कोर्ट में जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे, एंड दे वर हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिशियल्स. ही स्ट्रिक्टली सुपरवाइज्ड द मिरासदार्स हु हैड हेरिडिटरी राइट्स अर्लियर ऑन द लैंड. ठीक है. तो उन पे स्ट्रिक्ट सुपरविजन था. और रेवेन्यू सिस्टम जो यहाँ पे था, इट वाज बेसिकली, फिर से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये जो रेवेन्यू सिस्टम था, इट वाज इंस्पायर्ड एंड बेसिकली पैटर्न, इसका जो पैटर्न था, it was similar and on the exact lines of काठी सिस्टम. अब ये काठी सिस्टम कहां पे था? ये काठी सिस्टम था मलिक अंबर के कोर्ट में या उसकी प्रोविंस में. ठीक है. और इस काठी सिस्टम में होता क्या था कि पूरा जो लैंड है, ईच पीस ऑफ लैंड was measured by a rod. रॉड का नाम क्या होता था? काठी. ठीक है. रिमेंबर दिस. डन. और जब आप मराठास का रेवेन्यू सिस्टम पढ़ोगे तो आपने अभी तक चौथ और सरदेशमुखी पढ़ा होगा. दे वर द सोर्सेज ऑफ इनकम. चौथ वाज 1/4 एंड सरदेशमुखी वाज 10% डिमांड. और ये सरदेशमुखी उन एरियाज पे लगती थी जो आउटसाइड किंगडम थे. ठीक है. जो बस मुगल सुज़ेरैनिटी, ये मराठा सुज़ेरैनिटी को एक्सेप्ट कर रहे थे. 1/4 ऑफ रेवेन्यू वाज स्टैंडर्ड रेट. ये मराठास वाज पेड टू मराठास सो दैट द जो भी ये
प्रोविंसेस थे, जो भी ये स्मॉलर स्टेट्स थे, या जो भी स्मॉलर यू कैन से टेरिटरीज थी, वो लोग देते थे। वो इसलिए देते थे ताकि दे शुड नॉट बी अटैक्ड और रेडेड बाय नॉन मराठा टेरिटरीज, दे शुड नॉट बी अटैक्ड बाय शिवाजीज फोर्सेस। ठीक है। लास्टली इसका मिलिट्री सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड एंड एफिशिएंट आर्मी थी। ठीक है। एंड द ऑर्डिनरी सोल्जर्स जो थे उनको कैश में पैसा मिलता था, सैलरी मिलती थी। चीफ और मिलिट्री ऑफिसर्स जो थे उनको जागीर्स मिलती थी, जागीर और कैश। जागीर मिलती थी किसको? चीफ्स को, और कैश मिलता था ऑर्डिनरी मिलिट्री मैन को। ठीक है। और इस सिस्टम को बोलते थे सरंजम या सरंजमी सिस्टम और मोकासा सिस्टम। आर्मी में मवाली फुट सोल्जर भी थे, कैवलरी भी थी, हॉर्स राइडर्स भी थे, और दी इक्विपमेंट होल्डर्स, किसी के पास तीर कमान, किसी के पास बो एंड एरो, किसी के पास दी स्पेयर हेड, सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जो भी उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट्स रहा करेंगे, वो जिनके पास होते थे तो वो लोग अलग से होते थे आर्मी में। डन। इतना डिटेल में और ज्यादा नहीं पढ़ सकते इससे ज्यादा। ठीक है। अब आपको ये खुद याद रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। There is a situation in Bangladesh, and External Affairs Ministry has called it that it is an internal matter of the state, which resembles quite to our Panchsheel this principles, that we should not interfere into the internal matters of the other nation. The unrest has caused 150 deaths till now. Just keeping a track of it, we will be seeing, हमें बहुत जल्दी एडिटोरियल्स मिल जाएंगे इस पे, and then we will further deal with this editorial. ठीक है। Now talking about the कावड़ यात्रा, the famous कावड़ यात्रा। फेमस कावड़ यात्रा में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये होती ही है, और like you should be knowing about this because it's an important Hindu festival. ठीक है। It's basically held annually. It's annual Hindu pilgrimage. अब ये पिलग्रिमेज किसके लिए होती है? इट्स फॉर लॉर्ड शिवा। ठीक है। अभी इसमें होता क्या है? ये होती है जुलाई और अगस्त के बीच में, जिस टाइम को हम सावन का महीना बोलते हैं। ठीक है। दिस मंथ ऑफ सावन, अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर, there are some important instructions that you should not eat such kind of things, मतलब like non-veg नहीं खाना है लोगों को, they have to go for fasts and other things. That is something which we should not deal, which we can skip also, because that is something which is spiritual in nature. Rather we should be knowing a bit about this कावड़ यात्रा। कावड़ यात्रा का नाम कावड़ इसलिए पड़ा because of the bamboo pole which the containers hold। ठीक है। अगर आपने यहाँ पे देखा तो इसके पास जो ये पोल है जिसके ऊपर ये दो लोग बैठे हैं, लाइक मे बी मोस्ट प्रोबेबली हिज पेरेंट्स, आई गेस, कैरिंग देयर पेरेंट्स ऑन देयर शोल्डर्स। सी दैट इज समथिंग, दिस इज अ बैम्बू पोल एंड देयर इज होली वाटर विच इज अटैच्ड टू द पोल। ठीक है। एक ऐसे पोल होता है जिसके यहाँ पे एक दो मटकी होती, उन मटकियों में पानी होता है। वो पानी कहाँ से आता है? वो गंगा का पानी होता है, और गंगा जी का पानी लेके आते हैं एंड देन उस पानी को इस्तेमाल करते हैं किसमें? जल अभिषेक में। और जल अभिषेक किसका होता है? ये शिवाजी का होता है, ये लॉर्ड शिवा का होता है। ठीक है। नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज दिस इन दिस यात्रा, यू कैन सी देयर इज दिस फोटोग्राफ व्हिच हाइलाइट्स दैट बहुत ही लार्ज स्केल पे ये हो रही है। एक्चुअल इशू क्या है? इशू ये है कि ये जो यात्री जा रहे हैं, ये जा रहे हैं रास्ते से, तो इनको रास्ते में भूख भी लगेगी, खाना भी खाना होगा, बाकी सब चीजें भी होंगी, है ना। नाउ देयर इज यूपी एडमिनिस्ट्रेशन, यूपी गवर्नमेंट व्हिच हैज कम आउट विद दिस ऑर्डर कि जितने भी ईटरीज होंगी, जितने भी लोकल स्ट्रीट वेंडर्स होंगे जो ठेला लगाएंगे या जो खाना बेचेंगे, है ना, वो लोग अपने उस स्टॉल के ऊपर नाम डिस्प्ले करेंगे कि इस स्टॉल का ओनर कौन है।
ठीक है। सो नाउ दैट इज द इशू। अभी इस पे लाइक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है कि दी मुस्लिम्स दे आर सेइंग कि हमारा नाम आएगा तो इट्स काइंड ऑफ कि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, कि यू आर जस्ट segregating and you're just dividing the population ki, this is Muslim eatery, and this may create doubts and some other apprehensions and other things which is kind of political in nature. We do not need to go into that. ठीक है, we just need to understand the needs of this यात्रा। ठीक है, अब यात्रा में क्या हो रहा है? जल अभिषेक हो गया, लॉर्ड शिवा हो गया। तीसरी चीज, ये जो ये पानी लेके आते हैं, ये लोग जाते कहाँ है? पहले जाते कहाँ से? ये अपनी अपनी जगह से निकलते हैं, अपनी यात्रा करते हैं, और कहाँ जाते हैं? या तो ये हरिद्वार जाएंगे, गौमुख जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं जो कि उत्तराखंड में है, या तो सुल्तानगंज बिहार जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, वाराणसी जाते हैं उत्तर प्रदेश में। ये यहाँ जाते हैं और यहाँ से गंगा जी का पानी लेते हैं, इन मटकियों में पानी लेते हैं, उस पानी को घर लेके जाते हैं, और जहाँ पे उनको पर्टिकुलरली जो शिव ज्योतिर्लिंग है वहां पे होता है ये जल अभिषेक। जो उनका टेम्पल होगा शिवा का टेम्पल, उस टेम्पल में शिव जी का जल अभिषेक करते हैं इस पानी से। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट ये है कि इनको ये जो ये मटकी है, दिस शुड नॉट टच ग्राउंड। ठीक है, इसको कभी भी ये नीचे नहीं रख सकते हैं जमीन पे। ठीक है, बस दैट्स इट। एंड ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज दे शुड नॉट ईट लाइक फूड, वाटर, सॉल्ट। दे शुड ऑब्जर्व फास्ट, दे शुड take this journey in high spirituality and all of that, which is something different, and we should not go into that detail. Now the important point is about radars. See, whenever they say that state which are not important in the newspaper, you can just skip them and go to editorials. That is something which is not to be considered as a good advice. See, I took this news just for you to understand how much important are these news also. They say that the Chief Minister of Kerala has requested the Karnataka Chief Minister that you should use radars to locate the landslip hit people. Who is actually landslip hit? There is a truck driver whose vehicle got buried under the mud and submerged much of the arterial carriage way. तो हुआ क्या है, एक ट्रक फिसल गया लैंडस्लाइड के थ्रू और वो मड के अंदर चला गया। अब वो अंदर है, मड के अंदर है, जमीन के अंदर है, फंसा हुआ है। अब आपको ये देखना है कि क्या वो रेडार के साथ आप उसको लोकेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो कर सकते हैं, रेडार में इतना फंक्शन हो सकता है कि वो करेगा। प्लस GPS also indicated that जो ट्रक है it remained static and then it moved. Also, GPS had showed that driver had once attempted to start the vehicle twice. Remember this कि GPS का फंक्शन क्या है। ये हो सकता है आपका ट्रैप, कि अगर किसी गाड़ी में GPS सिस्टम लगा हुआ है तो then you can detect कि whether that truck has started or not. ठीक है, ये ट्रैप हो सकता है। नाउ ठीक है, इतना हमने समझ लिया। नाउ लेट्स सी हाउ रेडार फंक्शंस। रेडार लोकेशन को डिटेक्ट करता है, एनालाइज करता है वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, लाइक यू कैन सी एयरक्राफ्ट्स, शिप्स, सैटेलाइट्स, ऑटोमोबाइल्स, astronomical observatory bodies, astronomical bodies, birds, bugs, rain, everything can be a target of radar. How radar functions and how was it invented? It was basically a German scientist who discovered the radio waves. His name was Heinrich Hertz. Heinrich Hertz. Okay. He discovered these radio waves and said that these radio waves radiate off the metallic objects, and it was in 19th century. Okay. What is the basic working principle of radar is कि ये electromagnetic waves पे काम करता है। It evaluates the energy of the target, it evaluates the energy which comes back from the target, and then reads that energy, reads those signals, because it sees the object as a obstruction. ठीक है, this is the main operating principle of radar. Radar basically works how it works in a line of sight technique. ठीक है, ये करता क्या है, it sends
broadcast in straight lines. जो आपने शायद रेडार देखा होगा मूवीज में, ऐसे 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 सर्कल बना होता है एंड देन इट हाईलाइट्स यहाँ पे आपका टारगेट है. इट सेंड्स इट्स broadcast signals in straight lines, and then the transmission waves, they reverberate when they hit the item which is in its way. Then the types of terrain in the lines creates radar shadows. कि अगर कहीं पे terrain ऊपर है, नीचे है, mountain है, तो उससे radar shadow बनेगा which blocks out the region of the radar's sweep. That is one of the challenges. These shadows, once they appear, because the earth absorbs radar, then reflects the broadcast, allowing the receiver to perceive that there is an echo, and that echo has to be captured and read in manner. There are multiple types of radar, like bistatic radar, passive radar, Doppler radar. Recently, it was used in Jammu and Kashmir and for weather forecasting, and it was in news last year, I guess. Then there is monopulse radar. This monopulse radar contrasts the signals received using a certain radar pulse by comparing the signals as seen in various orientations and polarizations. ठीक है, तो that is monopulse radar. That is, it sends only one pulse and that it analyzes these pulses. ठीक है, it analyzes each pulse. ठीक है, these radars were developed in 1960s. There are weather radars also. The use of radar can be from it varies from air to surface to air. सरफेस टू एयर मिसाइल्स पे काम होता, यूज होता है ये. It helps in biological studies. ठीक है, it helps in air traffic control. It aids in the measurement of vessel development. Then a marine radar is also used to determine the distance between the two vessels which are away from each other. Even geologists have studied the structure of Earth and the structure of Earth's crust using the specialized ground penetrating radars. This is the radar about which the Kerala CM is talking about. Okay. Next important editorial talks about the Uttarakhand's, this bill which Uttarakhand's High Court has recently given protection to interfaith couple, in which the couple is, one is Hindu woman and another is Muslim man. They were living in a live-in relationship, and they are now being given protection under UCC. But the court said that petitioners need to apply for the registration under UCC within 48 hours, and then they shall be provided adequate protection for a period of 6 weeks. Okay, because they were receiving threats from their in-laws or from their relatives basically. UCC pertains to Article 44 of our Constitution, which is a part of DPSPs. It directs state that state should establish a uniform civil code for all citizens across India. For all citizens across India. Understood? All citizens across India. Remember this. Next is Goa is the only state which has a UCC, and it was this UCC is followed by, or basically called as, Portuguese Civil Code of 1867. If you talk about some prominent judgments on UCC, so the most important judgment was Shah Bano case of 1985. This Shah Bano case, इसमें हुआ क्या था? Court said that it's a matter of regret that Article 44 remained a dead letter and called for its implementation in this case. Next, there was Jose Paulo Contijo case in 2019. It was actually Jose Paulo Contijo versus Maria Luisa Pereira case of 2019.
in which the Goa court hailed that the Goa में जो civil code है, uniform civil code है, is a shining example which is applicable to all regardless of religion. In 2018, 21st Law Commission, which was headed by the Supreme Court Judge Justice Balbir Singh Chauhan, you can say the Law Commission, 21st Law Commission under Justice Balbir Singh Chauhan submitted a consultation paper on the reforms of family laws, wherein it observed that the formation or formulation of uniform civil code is neither necessary nor desirable. बस इतना याद रखना है, बाकी सारे प्रोविजंस जो है उत्तराखंड बिल के हैं, the bill, because there were some sentiments and this bill was sent to the president's approval earlier also under article 162, that is something different. गवर्नर के पावर्स टू रिजर्व अ बिल वो थोड़ा सा और डिटेल में हो जाएगा. वी विल जस्ट अंडरस्टैंड द की हाइलाइट्स, की पॉइंट्स ऑफ द बिल. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, the UCC aims to replace the distinct personal laws of every religion. पर्सनल लॉज को हटाओ और ये टैकल करेगा मैरिज को, डिवोर्स को, एडॉप्शन को, इनहेरिटेंस को, which will be most of the times guided by Article 44 of the Constitution. Done. That is one thing. Some of the key proposals of this bill were put forth by the committee to include issues like polygamy, निकाह हलाला, इद्दत. ये सब टर्म्स हमने इससे पहले डिस्कस किए हुए हैं, तो मैं अभी रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ट्रिपल तलाक एंड चाइल्ड मैरिज, uniform age for girls marriage across all the religions, and mandatory registrations of live-in relationships. यही एक प्रोविजन था लिव-इन रिलेशनशिप्स का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना. यही एक प्रोविजन था जिसपे ये बिल को ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था. हाउएवर, अभी मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन बिल पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है इस बार. तो ये एक ऐसा इशू है, ये एक ऐसा बिल है जो काइंड ऑफ लाइक इफ यू सी इंडिपेंडेंस से पहले गोवा में है यूनिफॉर्म सिविल कोड और किसी एक स्टेट में नहीं है, और बहुत टाइम से डिस्कस हो रहा है, तो देयर आर चांसेस कि इस बिल को हम कंसिडर कर सकते हैं. एग्जेम्पशन दिया गया है एसटीज को, and STs have been exempted from the purview of the bill. Already this bill has become an act, और उन पे ये बिल नहीं लगेगा. And the tribal population in the state, which is around 3%, have been voicing dissent against all of this, और उनको अलग कर दिया गया है, उन पे ये नहीं लगेगा, they are exempt. If you talk about the concerns which are highlighted over this bill, there is minimum age which is set to remain the same as 18 और 21 साल दोनों, 18 for 18 years and 18 for women and 21 for men. वो जो एज है उसको बराबर रखा गया, उसको चेंज नहीं किया गया. There was another concern जो मैंने अभी बोला, लिव इन रिलेशनशिप का कंसर्न, कि उसको मैंडेटरी रजिस्टर करना है, जिसकी वजह से जो है थ्रेट्स आ सकते हैं. And there is fine also if the marriage is not registered. ठीक है. So these were the concerns regarding this bill. Moving to the next editorial, this editorial talks about very much important editorial, talks about unemployment. ठीक है, written by Arun Kumar, as I usually read these articles very keenly. He says that there are conflicting narratives because he highlights that Prime Minister Modi has cited an RBI report which claimed that 8 crore jobs were created in 3 to 4 years. This was the recent statement by our Prime Minister. And he says that it contrasts with the report from the financial institutions like Citigroup, which pointed out that there is inadequate employment generation in India. So employment is a key topic in our economy. Next point is that how did this professor of economics come to conclusion that the statement by PM Modi is contrasting with the actual data.
he highlights 3 to 4 studies like RBI ka KELPS database. He says that he describes the methodologies in this database for measuring various economic indicators, and it says that ये जो database है, it does not independently estimate employment but uses official data. ये अलग से जाकर सर्वे नहीं करता है, ये ऑफिशियल डेटा को ही कंसिडर करता है. नेक्स्ट ही सेज दैट आरबीआई का डेटा, RBI का data claims that 8.9 crore jobs were created in manufacturing and services from 14 to 23 financial year, which estimates that total labor force is around 59.7 crores. Then he also highlights that data source, one more data source about the Center for Monitoring Indian Economy. He says that the unemployment rate in this data is rising and it's about 9.2% in June 2024. Now you can see एक डेटा ऐसा है जो हमें बोल रहा है 8 करोड़ जॉब्स, दूसरा डेटा ऐसा है जो बोल रहा है 8.9 करोड़ जॉब्स. ठीक है, फ्रॉम दिस टू दिस ईयर, जबकि ये डेटा बोल रहा है 3 से 4 साल में. ये डेटा दिस इज कंसिडरिंग अराउंड 9 years. Then the CMI is data which says unemployment 9.2%. He says that all of this data is the sources are there discrepancy and they are contradicting to each other. And he gives us the reasons कि ये data discrepancies क्यों है. सबसे पहले अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जहाँ पे 94% लेबर फोर्स है और यहाँ पे डेटा हमारे पास नहीं होता. Then he also talks about the baseline data कि जो हम डेटा कंसीडर कर रहे हैं वो 2011 की सेंसस के हिसाब से रखते हैं. बेसलाइन हमारा 2011 का होता है, बट एक्चुअल है एंड द अर्बन फ्री सर्वे डेटा वो भी 2012 से 17 का है. However, जो recent economic shocks आए हैं इंडियन इकोनॉमी में like demonetization, GST, NBFC crisis, COVID-19 crisis, they have changed actually the economic landscape. और अभी की कंडीशन जो है वो टोटली डिफरेंट है. आप जो डेटा ले रहे हो वो कंपेयर कर रहे हो आप बहुत पहले से 2011-12 से या 12-17 की सर्वे आप उठा रहे हो, बट एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है दैट इज टोटली डिफरेंट. देन ही आल्सो सेज कि एम्प्लॉयमेंट या किस इंसान को एम्प्लॉयड बोलेंगे उसकी डेफिनेशंस में ही डिफरेंस है. लाइक CMI, द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी, काउंट्स ओनली दोज हु आर अर्निंग इनकम एज एम्प्लॉयड. जो जिनके पास इनकम आ रही है वही एम्प्लॉयड है, जबकि BLFS जो है वो उन लोगों को कंसीडर करती है includes unpaid work and disguised unemployment also. It does not cover those who are in disguised unemployment. ठीक है, उनको तो कवर ही नहीं करती, उनको तो कैलकुलेट ही नहीं करती है. There are challenges in data collection also, like there is difficulty in surveying vast unorganized sector. जिसमें there are around 11 crore farms, 6.5 crore MSME units, जो लोग उनमें काम कर रहे हैं वो सारे लोग, तो वहाँ पे आप डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. So what is the impact of these definitions is कि PLFS, periodic labor force survey के according there are 50 to 55% people in labor force participation, whereas CMI highlights there are 40 to 45% labor force participation. ठीक है, 10% का फर्क तो यहीं पे आ गया, which results in a total figure of 90 million people. ठीक है, इतना तो डिफरेंस ही आ रहा है आपके डेटा में. But when you talk about the ground reality and the official narratives, there is discrepancy. It says the ground reality uses survey for employment. हमने अभी भी देखा था stampede, like situation हुई थी. अभी 2 दिन पहले हमने वो आर्टिकल्स पढ़े थे. stampede like situation हो गई थी, एक एयरपोर्ट पे हुई थी, एक कॉर्पोरेट ऑफिस में हुई थी, जिसमें लोग, आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा कि ऐसी सिचुएशंस आ गई थी जिसमें लोगों को इतने ज्यादा लोग आ गए थे 5-10 फॉर्म्स फिलअप करने के लिए कि स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन पैदा हो गई थी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस. ठीक है, इट टॉक्स अबाउट पैरामेट्रिक इंश्योरेंस. इट सेज दैट देयर इज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस अबाउट पैरामेट्रिक इंश्योरेंस. अब ये पैरामेट्रिक इंश्योरेंस क्या होता है? कहते हैं कि जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता है या क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स आते हैं बहुत ज्यादा, या नेचुरल डिजास्टर आ गया, किसी का भी कोई नुकसान हो गया, अगर वो चीज उसने पहले ही इंश्योर करके रखी है, दैट इज इंश्योरेंस, है ना, कि कोई नुकसान होगा तो देन द कंपनी, द इंश्योरर विल टेक केयर ऑफ दैट लॉस.
नाउ द एडिटोरियल हाइलाइट्स कि 2023 जबकि वार्मेस्ट ईयर था ऑन रिकॉर्ड, नेचुरल डिजास्टर्स दे अमाउंटेड टू अराउंड $280 बिलियन, ठीक है, एंड आउट ऑफ दैट ओनली $100 बिलियन वाज इंश्योर्ड। तो पहले तो ये डेफिनेशन आपको देखना होगा, डिफरेंस आपको देखना होगा कि लॉस कितना हुआ है और इंश्योरेंस में कितना है। तो इंश्योरेंस सेक्टर को एक्सपैंड करना इज वन मोर इशू, ठीक है। वन थिंग इज दिस, देयर इज सिग्निफिकेंट इंश्योरेंस कवरेज गैप, जो इस डेटा फैक्ट के थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट हाइलाइट्स व्हाट इज द करंट इंश्योरेंस चैलेंज इज दैट ट्रेडिशनल इंडेमनिटी बेस्ड इंश्योरेंसेस, कि जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान को स्टडी करेंगे, फिर फिजिकल डैमेज का असेसमेंट करेंगे कि घर टूटा, छत टूटी, कितना पार्ट टूटा है, उस पार्ट का कितना इंश्योरेंस बनेगा, कितना अमाउंट बनेगा, और उसी चीज को आपको वापस रिइंबर्स किया जाएगा। दैट इज वन थिंग, ठीक है। उसी चीज का इंश्योरेंस मिलेगा, उसी चीज की इंडेमनिटी मिलेगी। यहीं पे प्रॉब्लम है। ये जो ट्रेडिशनल वे है, इसको बहुत टाइम लग जाता है, बहुत डिफिकल्ट है इसको असेस करना लार्ज स्केल पे। जब डिजास्टर की बात आए, जब स्टॉर्म सर्ज की बात आ जाती है, जब साइक्लोन की बात आ जाती है, तो बहुत लार्ज स्केल पे ये होता है, नुकसान हो जाता है, और उसको मेजर करना बहुत ही मुश्किल चीज है। तो इसीलिए देयर इज दिस पैरामीट्रिक इंश्योरेंस जो यहाँ पे ऑथर हाईलाइट कर रहे हैं। व्हाट इज पैरामीट्रिक इंश्योरेंस? ये बोलते हैं कि वी विल स्टडी द डैमेज ऑन द बेसिस ऑफ सम पैरामीटर्स, लाइक अगर साइक्लोन आया है तो कितना रेनफॉल हुआ, विंड स्पीड कितनी थी, उसी बेसिस पे वी विल कैलकुलेट रियल टाइम मेजरमेंट्स, वी विल कैलकुलेट इट, एंड वंस वी कैलकुलेट वी विल गिव यू द पेमेंट, ठीक है। हम रियल असेसमेंट करने नहीं आएंगे वहां रियल ग्राउंड पे, ठीक है। वहां जाके हम फिजिकल असेसमेंट नहीं करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड द पैरामीटर्स, कि अगर फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आया है 6.8 मैग्नीट्यूड का, तो मोरक्को को ग्रांट मिलेगा इतना, 275 मिलियन यहाँ पे इंश्योरेंस पे चला गया, ठीक है। वो इंश्योरेंस का पैसा उन लोगों को मिला जो इंश्योरेंस किया हुआ था, जिन लोगों ने। वैसे ही इंडिया का रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम कैन बी देयर, जिसकी हेल्प से हम ये कर सकते हैं, जैसे नागालैंड में एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन होगा तो वहां पे कितना पैसा जा सकता है, as per the precipitation levels, not as per the damage which has created, which has caused. केरला में डेयरी फार्मर्स, उनको हीट स्ट्रेस की वजह से वहां पे नुकसान हुआ। अब वो कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मरे, कितने जानवर मरे, लाइव स्टॉक कितना मरा, डेयरी प्रोडक्ट्स कितने खराब हुए, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट हीट स्ट्रेस, हीट वेव को मेजर करना और उस पैरामीटर के बेसिस पे इंश्योरेंस का पैसा देना, दैट कैन बी डन, और ये बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगा। इसीलिए आपको ये चीज याद रखनी है और अपने आंसर में लिखनी है, when they ask you about the disaster management innovative solutions, ये आपका वे फॉरवर्ड बन सकता है, ठीक है। Rest, there are advantages to this implementation and what India can do, because we already have Aadhaar based payment settlement system, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। You can read about this editorial. Next important topic is about India's capital goods and the global electronic revolution. This editorial talks about the electronics manufacturing sector, कि इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। कैसे बन सकता है? कि इसको कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को प्रमोट करना होगा। नाउ हाउ विल इट प्रमोट इट्स कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट सेज व्हाट इज द करंट स्टेट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया. India's electronic production has reached $115 billion in 24, growing fourfold in the past decade. And projections ये है कि 5-fold increase हो सकता है next 5 year में. इसीलिए हमें यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत ज्यादा है हमारी गवर्नमेंट को। और ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट अराउंड $6.1 ट्रिलियन का हो जाएगा 2030 में। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको याद रख लेना, अपने नोट्स में लिख लेना। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज कैपिटल गुड्स? हाँ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज कैपिटल गुड्स? कि आपके पास एडवांस्ड मशीनरी टूल्स होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे, which are crucial for efficient, high quality electronic products. There is a need to develop unique cutting edge solutions for both domestic and global markets. There are key strategies which can be used to develop the
टू डेवलप इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और क्या क्या हम यूज कर सकते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कर दे किसमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और कितनी इन्वेस्टमेंट कर दे। अ प्रपोजल इज फॉर अ डेडिकेटेड सेंटर वर्थ ऑफ 1000 crore कॉर्पस पॉसिबली एट सेंटर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, CMTI जो है, वहां पे आप 1000 करोड़ का एक ऐसा डेडिकेटेड सेंटर बनाओ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ही हो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के। स्ट्रॉन्गर आपके पास IPR प्रोटेक्शन होना चाहिए। डोमेस्टिक डिमांड एंड एक्सपोर्ट पे फोकस होना चाहिए कि डोमेस्टिक डिमांड कितनी है और एक्सपोर्ट्स हम कितने कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। ठीक है, देन स्किल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड सस्टेनेबल एंड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग शुड बी देयर। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए, AI, IoT, बिग डेटा, इन सबको यूज कर सकते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। Lastly, there is global competitiveness also, and firms, Indian firms that can rival global leaders like ASML, they can be put forward and उनको थोड़ा बहुत और incentivize करके उनको आगे लिया जा सकता है। But the challenges always are there, like technological and gap skills कि इंडिया में very less population is there, which we actually called that they are skilled and market ready. Okay, which creates a challenge for us. But the long-term vision should be that we should be progressing towards the cutting-edge technologies, and India should position itself as a responsible and competitive manufacturing hub in the world. At last, there is this important editorial, this article about Houthis. Who are Houthis? Already asked by UPSC. Most probably not to be repeated, as we all know कि उतना ज़्यादा repetition नहीं होता है particular facts का, ठीक है, but remember this thing, this can be next time used in an option by UPSC, or if not in option, we still need to discuss the areas around the Middle East, क्योंकि हर साल ही क्वेश्चन आता है यहाँ से। तेल अवीव कहाँ पे है और हाउथीज कहाँ पे है, ये बहुत ही दूर दूर है। तेल अवीव अगर आप देखो तो इट्स हेयर, ठीक है, इजराइल की कैपिटल। और अगर आप इजराइल में एक रीजन है तेल अवीव, और अगर आप यमन देखो, यमन में है हाउथी कंट्रोल टेरिटरी विच इज हेयर, ठीक है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 270 किलोमीटर, ठीक है। और यहां से एक ड्रोन चलाया गया है एंड दैट ड्रोन हैज हिट तेल अवीव, इट किल्ड 1 and 10 वर वुंडेड। तो वो तो ठीक है, अलग कहानी है उसकी, एंड यमन हैव दिस हाउथीज हैव क्लेम्ड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस, वो तो अलग कहानी। Now remember, there are some of the key important places which are highlighted on this. इलात, रेड सी, ठीक है, ये दो ऐसी जगहें हैं जो आपको देखनी है कि कहाँ पे है। इजराइल कहाँ पे है, इजराइल की जोग्राफी देखनी है। डेड सी कहाँ पे है, दी डेड सी के बाद रिवर कौन सा है, जॉर्डन रिवर कहाँ पे है, क्या जॉर्डन एंड इजराइल आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं नहीं करते हैं, इराक एंड जॉर्डन आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है, लेबनान के साथ कौन बॉर्डर शेयर करता है कौन नहीं करता है। यूपीएससी आल्सो आस्क्ड दिस क्वेश्चन अबाउट कि विच ऑफ दीज कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद मेडिटेरेनियन सी, जिसका कोस्ट लगता है मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है। तो रिमेंबर ऑल ऑफ दीज, दिस इज रेड सी, दिस इज गल्फ ऑफ ईडन, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, देन देयर इज ओमान, Abu Dhabi, UAE, Doha, which is a city in Qatar. Then there is Kuwait city. Then is Iran, Iraq. Iraq is capital Baghdad. Then Mosul, River Tigris flows over here in Iraq, and Euphrates also. Then comes Syria. Syria, सीरिया के साथ आपको लेबनान मिलेगा, लेबनान के नीचे आपको यहाँ पे जॉर्डन मिलेगा, जॉर्डन के नीचे यहाँ पे इस साइड में आपको इजराइल मिल जाएगा, इजराइल के नीचे यहाँ पे कोने में आपको पैलेस्टीन और यहाँ पे गाजा स्ट्रिप मिल जाएगी, ठीक है। आई एम सॉरी दैट आई कैन नॉट जूम आउट दिस मैप, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बस ये हो नहीं रहा है जूम, ठीक है। रेस्ट वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस इन दी अपकमिंग डिस्कशंस ऑन इंडिया इजराइल रिलेशंस। जो ही क्वेश्चन आएगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाउथीज का ऑफिशियल नेम इज अंसार अल्लाह, ठीक है। दैट इज दे आर द पार्टिजन्स ऑफ गॉड। इट्स एन आर्म्ड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट इन यमन। दे आर बेसिकली, remember this, they are Zaidi Shias,
Shiites, ठीक है, and the Shiite Muslim minority community in the Islamic world, ठीक है, they are minority in Yemen also. These Houthis, they are a minority in Yemen also, but Yemen is predominant by Sunnis, Sunni Muslims. There is significant role played by these this minority community of Shias, which the Sunnis may be outnumbering them in hundreds and thousands, but the most important role is played by these Zaydis. Its members advocate a regional autonomy for Zaydis in northern Yemen. ये चाहते हैं अपने लिए एक autonomous province बनाना यमन में, and they have been fighting Yemen's Sunni majority government since 2004. They took over the Yemen's capital of Sana'a in September 2014 और उसके बाद उनने सीज कर दिया नॉर्थ यमन को पूरी तरीके से, ठीक है, और अभी ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है because they have been attacking the vessels who are crossing Red Sea and then in this area of Gulf of Somalia and all, ठीक है, इस एरिया को ये लोग बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल डोमिनेट कर रहे हैं और now they came into conflict with Israel also. The important question which was asked in UPSC, with this we are concluding the discussion, was about India being a net food importer. See, the question समझना जरूरी है, आंसर आप पढ़ लोगे. क्वेश्चन इज कि इंडिया एक टाइम पे नेट फूड इंपोर्टर था और अभी इंडिया इमर्ज्ड एज नेट फूड एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड. नेट फूड इंपोर्टर से नेट फूड एक्सपोर्टर बन गया. प्रोवाइड योर रीजंस कि हाउ इंडिया बिकेम सो, कैसे बन गया इंडिया, कैसे इमर्ज हो गया इतना ज्यादा. अभी यहाँ पे दो चीजें होती है डिमांड ऑफ क्वेश्चन. वन इज एक्सप्लिसिट डिमांड, वन इज इम्प्लिसिट डिमांड. एक्सप्लिसिटली इट आस्क्स यू अबाउट द रीजंस, ठीक है, कि आपको बस रीजंस देने हैं कि कहां से कहां पहुंचा है. आप शायद इसका एक फैक्ट दोगे, इसका दो चार और फैक्ट दोगे और आप रीजंस लिखना स्टार्ट कर दोगे. दैट इज व्हाट इज डन बाय द क्वेश्चन आल्सो. बट देयर इज इम्प्लिसिट डिमांड आल्सो कि इंडिया तो इमर्ज हो गया, ठीक है, नेट फूड इंपोर्ट एक्सपोर्टर, बट फर्दर अब इसके बाद इंडिया के पास अभी चैलेंजेस क्या है फूड एक्सपोर्टर बनने के बाद, उन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस क्या है, ठीक है, या इसके बाद लॉन्ग टर्म विजन क्या है, इसके बाद क्या करना है. लाइक अगर आप एक लीडर हो तो आपको फ्यूचर दिखना चाहिए ना, 200 साल 400 साल के बाद का फ्यूचर दिखना चाहिए कि अभी आप नेट फूड एक्सपोर्टर हो, आगे आपके पास क्या चैलेंजेस आने वाले हैं 8 से 50 साल के बाद, और उस टाइम के लिए आपके पास क्या प्रिपेयर्डनेस है. दैट इज व्हाट इज इम्प्लिसिट डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन, और वहां पे इसका कंक्लूजन आना चाहिए जो यहाँ पे इस मॉडल आंसर में शायद नहीं लिखा हो, बट आपको ये चीज समझनी होगी दैट देयर इज एक्सप्लिसिट डिमांड एंड इम्प्लिसिट डिमांड इन द क्वेश्चन, जो आपको समझना है, ठीक है. फर्दर यू कैन कॉन्टैक्ट मी on my number or you can join our Telegram channel Ignited Minds, and I wish you all the best for your day ahead. Thank you for connecting over here.